Yeah, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, is the screen visible? No, sir, it's loading. Okay, just a second. Just a minute. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. But your screen has not yet been shared. Okay, we'll see that later. I will now share the whiteboard at present. Is the whiteboard visible? Wait a minute. Is the whiteboard visible? Yeah, just showing loading your whiteboard. But yeah, it's visible. Okay. It's No. visible. Yeah. So today we will be starting with chapter 8. Chapter 8, no? Climate. Which chapter is climate? I think it's chapter 8 only, now. Hello. Hello. Hello, Anant. Am I audible? Hello. Am I audible? Hello. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay, so climate is chapter 8, right? So in our textbook, it's given part 2 Geography of India, chapter 6 Location, Extent and Physical Features. Okay, I think so. That's the updated textbook. I have the last year one. Okay, no issues. I think so. The content remains the same. Yeah, I think so. The content is same only. Wait a minute. You're teaching about climate. Okay, then that's chapter 7. Okay. I think so. This is the old one. So this has chapter because this is one more extra chapter of topography in the starting. That's why. Yeah, that our teacher told that you have to just go through, otherwise everything is covered in the topography textbook itself. Yeah. I have sent you one link, new link after this meeting gets over. After So, yes, sir. I know about that. You sent that previously as well, so I know about that. yeah. Now, can you tell me the difference between climate and weather? लोअर क्लास में पढ़ा होगा कभी. Yes, sir. The climate occurs for is the condition of a place for a longer period of time, and weather is the condition of a place for a shorter period of time. Yeah, like both are phenomenon only. Like this is also a phenomenon. Like it's a natural phenomenon, and this is as well a phenomenon. But the difference is that weather changes drastically. It changes drastically, and it changes like periodically.
So in exam, if in case they ask you, because once 1 year they had asked in Kapulka prelim, so other schools may ask or may not ask, but board doesn't ask such questions. So just explaining ki in case अगर board ने पूछा, because it's a general question. Periodically, in the sense, it takes 30 to 32 years for a climate of a particular area to change, and weather changes in like for example, if we take example of Mumbai, like in May last week, we have like hot weather, and then suddenly it rains and weather temperature comes down. So weather changes accordingly. So main difference is that. And now, but our main topic of concern is climate. Weather तो हमने lower class में बहुत पढ़ा है कि how weather gets affected. Temperature variation, weather changes. Rainfall, precipitation happens, weather changes. Anything, any atmospheric pressure changes, weather changes. So weather is like drastically changes, and climate is phenomenal. So our main concern would be climate. So now, what do you know about climate? Like in your knowledge, what do you know about climate? Like what exactly, according to you, So in climate, I know that like you can say India has five types of climate. That hot climate, which is present in Thar Desert due to the deserts, and No, then no, there's no, no. the That is not climate. uh, Those are what we are speaking. It's season. Like depends upon everything. Like the presently in India, April, May, hot weather season is going on, and now as the June starts, southwest monsoon season. So हम लोग का जो topic रहेगा, it would be based on monsoon only. हम लोग हर चीज matlab, sir, I know that there's tropical monsoon climate, India yeah, lies in tropical desert. subtropical climate. Like India lies above equator and the Tropic of Cancer. Like this is your India. Say this is your India. Yeah, and this is your Punjab. This is your Rajasthan. And say this is your Gujarat. And this is your Maharashtra and all. And this is your say Uttarakhand, and this is this. This is roughly India. And the Tropic of Cancer passes from here. Map marking में हम लोग सीखेंगे ऐसे 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 it passes. So it passes and इधर this is Narmada and this is Tapi river. दोनों के बीच में से जाता है. So this is your roughly India gets divided into two equal halves by the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer के नीचे वाला part experiences a type of torrid climate. मतलब torrid zone we can say torrid belt. And the say this is your Tropic of Cancer. Here is Mumbai and here is Delhi. Delhi lies in temperate zone. Mumbai lies in tropical zone. So the Tropic of Cancer divides India into two seasonal, two not seasonal. Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Wait a minute. Am I audible now? Yes, sir, you're audible. There's some connectivity issue at my end, Okay. so the words you're speaking are coming a little late. No, no, no issues. Okay, so this is like Tropic of Cancer, 23.5 degree north. सो ये हम लोग मैप मार्किंग हम लोग सीखेंगे. ये अभी हम लोग इसके बारे में और देखेंगे गिव रीजन जो हम लोग का रहेगा. सो बेसिकली हमारा जो क्लाइमेट चैप्टर रहेगा वी विल टॉक इन द टर्म्स ऑफ मॉनसून. ना अभी हम लोग का चैप्टर हम लोग का स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि मई में एटलीस्ट हम लोग की ज्योग्राफी के जो 5 मेन चैप्टर्स पता है ना कौन से अपने. नहीं, मतलब एक क्लाइमेट है वो पता है, कोर्स में और मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर. क्लाइमेट एग्रीकल्चर. नो 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 एग्रीकल्चर का भी गलती से भी हाथ मत लगाना. क्लाइमेट, वाटर, देन यू हैव सॉइल, एनवी. एनर्जी. नो एनर्जी वगैरह में वो सब हाथ लगाना ही नहीं है. एनवी मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो तुम्हें सेक्शन बी में 5 सेट्स अटेम्प्ट करने होंगे. तो ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये. अभी तुम जो एग्रीकल्चर बोल रहे हो, एग्रीकल्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 चैप्टर्स. तुम्हें 4 अलग अलग चैप्टर पढ़ने होंगे एक सेट के लिए. इसमें एक चैप्टर एक सेट है, इसलिए यू नीड टू प्रिपेयर दीज 5 चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड्स. बाकी जो चैप्टर्स है जस्ट रीड फॉर एमसीक्यू ओनली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ये जो है Yes. चाहिए तो अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में जहाँ लिखना है लिख लो, घर के दीवार पे भी लिखना है लिख लो। यही 5 चैप्टर्स अपने को अटेम्प्ट करने। यू कैन कीप सम बफर चैप्टर्स लाइक वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट तभी अटेम्प्ट करना व्हेन यू हैव अ प्रीटी गुड जनरल नॉलेज। एंड यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मिनरल रिसोर्सेज। आई वुड सजेस्ट मिनरल रिसोर्स को एंड वेस्ट को बफर चैप्टर रखो, इन केस अगर इसमें से किसी एक सेट में तुम्हें डाउट लगा। सो दीज 2 चैप्टर्स कीप एज बफर, बाकी सबको एमसीक्यू के लिए छोड़ दो। बाकी सबको जस्ट रीड ओनली 5 to 6 Okay. टाइम्स इन अ मंथ, नॉट बिफोर बोर्ड्स, एक साल में नहीं। Okay, so this is your 5 main chapters: climate, water, soil, envy and transport. क्योंकि ये सिंगल चैप्टर्स है, और बाकी जो है ना वो कम, लाइक एग्रीकल्चर इज ऑफ 4 चैप्टर्स, मिनरल्स इज ऑफ अबाउट 3 या 2 चैप्टर्स, वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑफ 2 चैप्टर्स। तो ऐसे तुम्हें एक सेट के लिए करीब 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटर डोंट अटेम्प्ट दोस, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा, Oh, फिर टाइम लगता है चैप्टर के लिए, और फिर उसमें पता भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे। वेल, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। So India has a tropical monsoon type of climate. So you can write this कि इंडिया का कौन सा type of climate है, tropical monsoon. This is because India lies in a tropical belt and this. Now regional variations. So India में भी जो regional variations बहुत है. Suppose say in Maharashtra. Say this is a Maharashtra. Roughly Maharashtra. Seems like a fish. No issues. So this is your Mumbai somewhere, and this is your Western Ghat. This is your Pune. एंड पुणे में भी है, दिस इज नासिक एंड ऑल। तो मुंबई यहाँ पे है, तो सी के इन्फ्लुएंस से लैंड ब्रीज सी ब्रीज की वजह से मुंबई का टेम्परेचर 25 to 27 के बीच में होता है। से योर डे टेम्परेचर इज 27, योर नाइट टेम्परेचर इज 25 ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर अगस्त सितंबर। सेम इस साइड पुणे है। पुणे का डे का टेम्परेचर वुड बी 30 डिग्री सेल्सियस, रात का इट में बी 20, और इट में गो एज 19 एज वेल। तो इसलिए क्योंकि ये सी इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, और बीच में वेस्टर्न घाट्स भी है। तो हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, एक ही स्टेट में होके इतना वेरिएशन क्यों है। इवन दो से व्हाट कैन वी से, इवन दो Mumbai and somewhere like Mahabaleshwar, not take so let it be. Even though Ooty is at a greater height and Mount Abu is also at a greater height, why does Ooty experiences why does Mount Abu? No, let it be. हम लोग वो point देखेंगे. Now you won't understand अभी. Now let's go through it. जो temperature वाला part है just read only. Like Barmer in Rajasthan may record a temperature of 48 to 50 degrees Celsius on a June day, where it hardly reaches 22 degrees Celsius at Pahalgam. So this is your Jammu and Kashmir, and roughly Jammu and Kashmir. And this is your Katra. This is your Jammu. This is your Udhampur. This is your Katra. Jammu, Udhampur, Katra. And as you cross Katra, you will come here Srinagar. Then nearby you have Pahalgam, Gulmarg, sir, Sonmarg. just a minute. एक minute, sir. एक minute. Just a minute. Yeah.
Yes, sir. Is the screen visible to you? Yeah. Okay, so can you see the map of India? Yeah. Okay. So now we will come to our precipitation वाला part. ये जो पहले के जो parts है not much important. Temperature you can read on your own क्योंकि उतना कुछ इसमें पढ़ना नहीं है. Now we have this first point, Cherrapunji and Mawsynram and Meghalaya. So this is your Garo, Khashi and Jentia, Jentia. Like this is, say this is your Garo, Khashi, Jentia. Just remember their names also. Garo, Khasi, and this is your Jentia. What are these? These are mountains, like the local mountains, not mountains, roughly like structure. These are Okay. roughly like mountains only, and the names are given on the local tribes. जो वहाँ उस Hills. sorry, Hills. हाँ hills something or you can say a mountain because क्योंकि इधर शिवालिक रेंज आता है इधर, so you can say these are part of southern Himalayas. So let it be, ये हम लोग का कंसर्न नहीं है, हम लोग को गारो, खासी, जैंतिया, these are the names given on the name of local tribes. जो वहाँ की जो local tribes है उस state की, उन सबके नाम पे दिया गया ये name. And while you will be doing map marking in your map, तो ये तीनों important रहेगा map marking के लिए. तो this is your Cherrapunji. Say this is your Cherrapunji, and this is your uh, Cherrapunji. Okay. ये हम लोग यहाँ पे से this is your दिसपुर. तो जो माउंट विंड्स आते हैं, विंड्स मानसून के विंड्स ऐसे दे स्ट्राइक फर्स्ट एट दिस पार्ट. ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे लोग स्ट्राइक करेंगे एंड दे शेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल. Yes. एम आई ऑडिबल? योर वॉइस इज ब्रेकिंग आई थिंक सो. एम आई ऑडिबल ना? Yes. Okay. ओके. सो in the textbook it's given Cherrapunji and Mawsym Ram and Meghalaya get about 111 like 1100 centimeter of rainfall, and Jaisalmer Rajasthan received 9 centimeter annual rainfall. Why? Jaisalmer lies roughly here, इधर मतलब इस पॉइंट पे, एंड द विंड्स विच आई विल एक्सप्लेन यू दिस. मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है ये सब हम लोग एक्सप्लेन करूंगा, मतलब बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है. Because even though Jaisalmer and Cherrapunji are roughly on the same contour, same line, but Cherrapunji gets more rainfall than Jaisalmer. We will study everything. Now we will come to the most important part. Am I audible now? Okay. Am I audible? Yes. You are audible. So first we have the Himalayas. Yes, yes. So first we have the Himalayas. The Himalayas act as a climatic barrier from here to here to here. ठीक है. तो ये these are trans Himalayas because ये these are a part of Himalayas because यहाँ पे जो रहता है ना, पाकिस्तान का ब्लैक सॉल्ट रेंज भी आता है and many other more ranges. तो this is the wait a minute. This is the Himalayan range. ऐसे. सो वाइल वी विल बी डूइंग मैप मार्किंग ना, तो ये जो नेपाल वाला पार्ट है ना, हम लोग मार्क नहीं करेंगे नेपाल और भूटान वाला पार्ट, क्योंकि नेपाल एंड भूटान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे सिक्किम में थोड़ा, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में. एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट इवन दिस पार्ट लाइज इन नेपाल? क्यों हम लोग को इम्पोर्टेंट है? यू नो यहाँ पे तिब्बत के ऊपर साइबेरियन विंड्स आते हैं, मतलब रशिया से. सो दीज आर वेरी कोल्ड विंड्स, मतलब इतने कोल्ड रहते हैं कि अगर वो विंड्स इंडिया में एंटर हो गए तो दिस उत्तर प्रदेश वुड नेवर हैव बीन एग्जिस्टेड ओनली. उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ, वी कैन से पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल, हरियाणा, पंजाब, इवन राजस्थान. सो ये इंडिया का पार्ट होता ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज दीज साइबेरियन विंड्स ना are so much cold, and these western Himalayas act as a climatic divide. तो यहाँ से जो winds आते हैं ना, इनको रोकते हैं, and these winds shed the snow and shed the winds here this side पे, और ये हो जाता है rain shadow. Do you know what is rain shadow area and what's the like wait, let me tell you with the help of background.
Okay. So can you see this diagram on this side? Hello. Okay. So wait a minute. Okay, so this one part, as these winds are coming from some sea. Say this is your XYZ sea. तो ये winds आते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो क्लाइमेट ये जो माउंटेन है इन लोग को फोर्स करता है कि आप यहाँ पे रुक जाओ एंड दीज विंड्स वेट हियर जो बारिश होता है यहाँ पे गिरता है और फिर कैसे भी हवा से और फोर्स की वजह से ये विंड्स ऊपर से चले जाते हैं यहाँ पे उन्होंने अपना 90% पानी यहाँ पे अपना शेड कर दिया तो यहाँ पे उनके पास सिर्फ 10% बचेगा एंड दस यहाँ पे जो रेनफॉल होगा काफी ज्यादा कम होगा एंड दिस इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया एंड दिस इज कॉल्ड windward area or windward side. This is also known as leeward side. तो ये होता है लीवर्ड एंड विंडवर्ड साइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो अभी हिमालय से हम लोगों ने देखा कि हिमालय हाउ दे एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड. सो जो क्लाइमेटिक हिमालय एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर. जो कोल्ड साइबेरियन करंट्स होते हैं उनको इंडिया में आने से प्रिवेंट करते हैं और इंडिया को कोल्ड डेजर्ट बनने से रोकते हैं. सो इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाती है मतलब नॉर्दर्न नदर्न प्लेस में जो गैंजेटिक प्लेन्स है. एंड ऑल्सो हिमालयाज ऑल्सो लाइक अगर साइबेरियन विंड्स इंडिया में एंटर हो गई भी किसी भी तरह मतलब ये अगर एंटर हुई तो इंडिया बन जाएगा कोल्ड डेजर्ट. इसलिए हिमालय यहाँ पे है. इसलिए इंडिया कोल्ड डेजर्ट नहीं बनता. अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया वुड ऑल्सो बिकम थार डेजर्ट जैसा बिकॉज दीज अरेबियन सी से जो विंड्स आते हैं. लेट मी चेंज द कलर. ये जो अरेबियन सी से जो विंड्स आते हैं ऐसे they would have passed surpassed this Himalaya and entered into China and give rain here. तो इंडिया में भी रेन नहीं होती और इंडिया ड्राई हो जाता. इसीलिए मतलब हिमालयाज कोल्ड डेजर्ट बनने से भी रोकते हैं इंडिया को बचाते हैं और हॉट डेजर्ट बनने से भी बचाते हैं. सो हिमालयाज प्ले अ डबल रोल. So now we are coming to the second point, monsoon winds. So second point is monsoon winds. Now how do these monsoon winds affect the climate of India? During summer season, hello, hello. Okay, yeah. So during summer season, when lands are hot and the surrounding sea bodies are cool, sorry, these are cool. Anant, am I audible to you? Yes, sir. Sir, my net went unstable. Could you repeat? Okay, I actually have recorded it, but I will explain it again. Okay, just a minute. Huh? तो मैंने जब अगर when you got disconnected I explained this part windward leeward. So ये डायग्राम पता है ना मैंने बनाया था. एंड से दिस इज योर XYZ sea. यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है. तो एवापोरेशन से जब यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होंगे विंड्स
विंड ऐसे ब्लो होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो माउंटेन है उनको फोर्स करेगा यहाँ पे रुकने के लिए, ये ऐसा बैरियर एक्ट करेगा। तो यह लोग यहाँ पे रुकेंगे, अपना मॉइस्चर बारिश करेंगे, बारिश गिरेगी, मॉनसून होगा। बट किसी भी तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर और हवा की वजह से ये इसको क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे वो लोग अपना 90% मॉइस्चर लूज कर देते हैं, उनके बाद बचा 10%। और यहाँ पे 10% वो लोग मॉइस्चर अपना लूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रेन शैडो एरिया, and this is called the windward area. Are you getting my point, Anand? Anand, are you getting my point? Yes, sir. Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. ठीक है, चलेगा। I'm just erasing this part. अगर if you are not audible, no, so just write in the chat so I can just read it. ओके सर, बस प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा टाइम से आता है, थोड़ा टाइम से आपको सुनाई देता है, बस ऐसा हो जाता है जूम में। हाँ, अगर नहीं भी आवाज है तो you can just type your doubt. I can see in the chat. Okay. Now continuing monsoon winds. So ये ओके जो monsoon winds है, जब सर, यहाँ, नेक्स्ट टाइम कैन वी हैव द मीटिंग ऑन गूगल मीट? ओके नो इश्यूज बिकॉज आई थिंक सो गूगल मीट पे ऐसा ये, बिकॉज उसमें टाइम लिमिट भी नहीं होता है और उसमें फिर थोड़ा कम बैंडविड्थ होता है, इसलिए। नो इश्यूज नो इश्यूज, बट द मेन थिंग इज दैट कि गूगल मीट पे ऐसा वो शेयरिंग फीचर्स आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अवेलेबल, बट वी विल चेक। ओके, सो okay, no issues. So now we have the second one, monsoon winds. So during summer like the April May के वक्त land is very hot, बहुत गर्म है heat की वजह से, and the surrounding sea is very cool, बीट बे ऑफ बंगाल, बीट अरेबियन सी, बहुत कूल है। तो यू नो ना कि हॉट रहता है तो कैसे टाइप का प्रेशर रहता है, कूल रहता है तो कैसे टाइप का प्रेशर रहता है। व्हेन द लैंड इज हॉट, सो लैंड के ऊपर रहता है लो प्रेशर। तो अभी क्यों लो प्रेशर होता है, पता है क्यों लो प्रेशर होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स एक जगह आ जाते हैं, इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके। तो यहाँ पे जो सी का जो टेम्परेचर रहेगा वो सी के ऊपर प्रेशर जो रहेगा हाई रहेगा। एंड वी नो कि जो भी विंड्स रहता है वो हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है, हाई टू लो। एंड दस जो विंड्स रहेगा सी टू लैंड ब्लो करेगा, मतलब अरेबियन सी से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब नाउ अब यहाँ पे आता है टर्न एंड ट्विस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, टर्न आता है। सी, जो विंड्स होते हैं ना ऐसे आते हैं, दे कम फ्रॉम हियर एज वेल। यहाँ पे क्या है ये, व्हाट इज दिस, टेल मी। ये जो मैं रेड में शेड कर रहा हूँ वो क्या है? यू कैन टेल इन द चैट बॉक्स एज वेल। ओके, सो दिस इज द वेस्टर्न घाट्स एंड दीज आर द ईस्टर्न घाट्स। जैसे विंड यहाँ पे आता है, इधर दे गेट सेपरेटेड, क्योंकि इंडिया का पेनिनसुला है तो वो ऐसे चले जाते हैं, या तो वो ऐसे चले जाते हैं। सो ये यहाँ पे जब आते हैं तो वेस्टर्न घाट्स बीच में आ जाते हैं, तो दिस शेड द मेजर रेनफॉल यहाँ पे। तो आई एम चेंजिंग द कलर। तो यहाँ पे मेजर रेनफॉल हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द विंडवर्ड साइड, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के इस साइड है। एज सुन एज दे क्रॉस द बैरियर, वो लोग आ जाते हैं लीवर्ड एरिया में। सो महाराष्ट्र का, सो दे में आस्क यू वन क्वेश्चन, वन मोस्ट कॉमन एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड,
कि why western Maharashtra receives more rainfall than central Maharashtra. So can you tell me the reason, Anant? Hello. Okay, I think so. Your voice is not audible. Okay, just let it be. Copy this question if you want. The reason is that कि जो western Maharashtra है वो western Ghats के इधर आता है, and so the winds enter and they shed their major moisture on the windward side. And as soon as they cross the western Ghats, they enter the central Maharashtra. यहाँ पे उन लोगों के पास moisture content decrease हो जाता है, इसलिए rainfall less होती है. And so central Maharashtra receives less rainfall than western Maharashtra. Are you getting my point? ओके, सो या सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विंड जैसे एंटर होता है इस साइड पे, as soon as they enter this side they shed the moisture on the western Ghats. So say this is a western Ghats, wind enter हुए, यहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल किया, फिर जब ये लोग ने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा क्योंकि जो मेजर 90% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे रिलीज हो गया, यहाँ पे उनके पास कुछ बचा सर नहीं. जैसे मुझे सॉरी, हेलो. Okay, so the winds enter here and यहाँ पे less moisture होता है. So now continuing further, हम लोगों ने monsoon winds और हिमालय देख लिया. Okay, just a minute, erasing this all. While studying climate का chapter ना, keep a map with you always. Physical map preferably. Physical map रहेगा तो ज़्यादा easy पड़ेगा पढ़ने में. You can keep any other map as well. And now we have, let me check. Yeah. So we have now latitude. The important thing the students get usually confused is this one: latitude and altitude. दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. Latitude in the sense, ये जो स्टैंडिंग लाइन है, these are longitudes, and the sleeping ones are the latitudes. So these are the latitudes. Okay. तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, लैटिट्यूड रेड वाला, ठीक है, लैटिट्यूड इज रेड वन. ओके, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है. सो से यहाँ पे इस वाले लैटिट्यूड पे यू हैव मैसूर, एंड इस वाले लैटिट्यूड पे है पुणे, इस पे से यू हैव भोपाल, एंड नाउ इस पे यू हैव अयोध्या. सो मैसूर का विंटर टेम्परेचर जो रहेगा, इट वुड बी अराउंड 28 to 30 डे टेम्परेचर. एंड वेर एज अयोध्या का जो टेम्परेचर रहेगा विंटर टेम्परेचर, इट वुड बी 8 to 10, not 8 to 10, you can say 10 to 12. So as latitude increases, temperature decreases. You can remember this. Same applies with the altitude as well. Latitude refers to these lines, जो imaginary lines होती है, and altitude refers to the height above the mean sea level. So altitude is the height above the mean sea level. So say like Mumbai ka height, we can say this assuming कि मुंबई का height is 30 meter above the mean sea level. So there is one common thing कि for every 166 meter rise होता है height में, तो 1 degree Celsius कम होता है. Say this is a mountain.
Here is Mumbai. फिर 166 मीटर पे you have Pune. Then you have here Jammu at 1 kilometer. तो मुंबई में temperature would be 30 degrees Celsius say. पुणे में would be 29. And here it would be 24 degrees Celsius क्योंकि 1 kilometer increase 6 degrees Celsius temperature decrease. So as the altitude increases, temperature decreases. Altitude increases, temperature decreases. That's why. So giving you a rough example, say here you have again Mysore or say Bangalore. Bangalore would be having winter temperatures 30 degrees Celsius during day. And now going up, say here you have your Jammu. Jammu में the winter temperature would be 5 to 6 degrees Celsius. So why? Because altitude difference है बहुत ज़्यादा. Altitude भी है latitude. Jammu lies about 800 meter above the mean sea level, and Bangalore rise above. Where's Bangalore? So Bangalore roughly lies here about say 20 meter above the mean sea level. So you can see the difference 820. So you can see the difference. Okay, are you getting my point? Yeah. So we have completed with latitude and Yes. altitude, and now we have the very